Hello and welcome to Prowings CS. Hello professionals. Hope आपकी preparations अच्छे से चल रही है and this time we have taken corporate restructuring का test. Let's see. काफी students ने दिया है test और okay performance दी. जो लोग ऑनलाइन इस टेस्ट को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज ऑनलाइन वो टेस्ट पेपर डाउनलोड करके टेस्ट दीजिए. सिर्फ प्रैक्टिस मैच को सिर्फ देखने से आप प्लेयर नहीं बनते. यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग दैट. एग्जैक्टली. किसी भी मैच को आप देख लो, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को आप देख लो, प्लेयर बनने के लिए यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग. तो अगर आप पेपर दे रहे हैं तो प्लीज 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 आंसर हाइड करके सॉल्व करने कीजिए. इनफैक्ट दिन में 1 घंटा तो हमेशा ही रखिए कि कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए कि आप आउटपुट कैसे दे रहे हैं, आप सॉल्व कैसे करें. तो प्लीज ट्राई एंड डू इट. ओके, चलो देखते हैं इस बार का टेस्ट पेपर कैसे हुआ एंड डू डाउनलोड. बहुत अच्छा पेपर था. काफी स्टूडेंट्स ने बोला, कमेंट किया, अच्छा लगा सर. सो चेक इट आउट. टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पेपर. तो यहाँ पे इस पेपर में क्या क्या चीजें अपने को ऑब्जर्व करनी थी. Okay, let's see and understand what things we were to observe in this paper. Okay. Question ऐसा था कि Quality Rubber Limited is a supplier of raw material. They filed a petition before the NCLT for recovery of 10 lakhs against Smart Latex Company. So एक कंपनी ने CIRP के लिए एप्लीकेशन डाला है NCLT में दैट इंसॉल्वेंसी करने के लिए, रादर रिकवरी ऑफ इंसॉल्वेंसी के हिसाब से. तो ये जो एप्लीकेशन है उसके बारे में अब आगे क्या दिया है, लेट्स अंडरस्टैंड. स्मार्ट लेटेक्स लिमिटेड द कॉर्पोरेट डेटर. तो ये स्मार्ट लेटेक्स अपना कॉर्पोरेट डेटर है. Has other financial creditors to the extent of 1 crore 50 lakhs and they also joined together and filed the petition to NCLT. तो इन सब ने petition अब डाल दिया है NCLT में. ठीक है. The corporate debtor has a total of 40 financial creditors and 2 operational creditors. ठीक है. And further, all the financial creditors having voting rights on the shares equally. तो equal voting rights है. चलो एक बात तो अच्छी हो गई that they are common shareholder. Common है. The notice was issued on 1st of August and the conduct of the first meeting held on 5th of August. Time frame के अंदर है. Okay. The meeting was attended by 40 FCs and 2 operational creditors. ठीक है. The resolution was passed to appoint Mr. Naveen as a qualified CS as a resolution professional. ठीक है. 25 of the financial creditors voted in favor of the resolution and 10 voted against the resolution and 5 creditors and 2 OCs abstained from voting. Oh, तो ये वोटिंग वाला क्वेश्चन है कि whether Naveen is properly appointed or not, because decide in terms of the information whether resolution passed to appoint Mr. Naveen is valid or not. अब समझ में आया. तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन फैक्ट्स वगैरह समझने के बाद अब लास्ट में ये लोग बता रहे कि क्वेश्चन किस लिए था. And in the light of the provisions read with the rule explain the requirements of a valid quorum. Valid quorum 130 quorum हो जाता है. 33% इतना तो हमको याद है. और रेजोल्यूशन पास करने के लिए 66% चाहिए. बस इतना बेसिक पॉइंट याद रख के आपको आपका आंसर लिखना है. ओके, लिखते. तो हम आंसर इस तरीके से शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी शैल बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी. ठीक है. तो हमने स्टार्ट में बता दिया कि 7 days के हिसाब से मीटिंग होनी चाहिए. द फर्स्ट मीटिंग हैज टू बी हेल्ड विद इन 7 days. और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द फर्स्ट मीटिंग मे बाय मेजॉरिटी of vote not less than 66% of the voting share either resolve to appoint an interim resolution professional as a resolution professional or replace the interim resolution professional by another resolution professional. तो हमने बता दिया एक आईआरपी को, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिसाइड कर सकते हो या फिर एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंडिपेंडेंटली अपॉइंट करना चाहो तो वो भी डिसाइड कर सकते हो. ठीक है. फिर आगे का पॉइंट लिख सकते हैं कि द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल कोरेट इफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट. इसलिए मैं बोला 33% का कोरम है. तो इफ 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट तो मीटिंग अपने आप में कोरेट हो जाएगी. मीटिंग अपने आप में कोरम में हेल्ड हो सकती है. क्लियर. ठीक है. एंड द एडजर्न मीटिंग शैल कोरेट अगर किसी वजह से एडजर्न हुई तो with the members of the committee attending the meeting. So those who are members attending the meeting उतने भी काफी हो जाएंगे if the meeting stands adjourned for some of the reasons. Clear? Fine. अब इसके बाद हम अपना facts वगैरह cite करते हैं.
So as per the given facts in the question and the provisions of the law, the requisite quorum was present in the meeting. Was it present? Yes, it was, because all FCs have attended the meeting and 5 of them abstained from voting. तो 40 minus 5 35, इसका मतलब 35 लोगों ने वोटिंग किया था. Clear? And not less than 66% shall resolve to appoint a resolution professional. तो एज अ रिजल्ट टोटल वोटिंग में कितना निकला 71.4. कैसे 25 voted in favor divided by 35 multiplied by 100 कितना आया 71.4. So that's what the figure was. Hence the appointment is valid in law. अब समझा? अब समझ में आया किस तरीके से वैलिड थी. तो इस तरीके से अपने को आंसर डिस्क्राइब कर सकते थे. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ मॉडल आंसर. बाकी यू आर फार मोर एक्सपीरियंस पर्सन, तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते थे. क्लियर? समझा? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने को लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि default by debtor was a crime punishable with imprisonment or death. Forgotten perception of law of bankruptcy transform the phase of giving opportunity to the bankruptcy or insolvent for revival. Express your views for evolution of insolvency laws. Okay, मतलब way back हमको बात पूछी गई है. मतलब एक टाइम था कि जब आप लोन रीपे नहीं करते थे वो गुनाह माना जाता था, गुनाह की सजा होती थी, आपको जेल डाल दिया जाएगा. मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के उस लॉ के बाद में, समथिंग लाइक 1542 का लॉ था. और उस लॉ के बाद फिर यूके में भी चेंज आया, यूएसए में चेंज आया, यूएसए में चैप्टर 11 आया और उसके बाद काफी चीजें चेंज हुई और यूके एक्ट में चेंज आया. तो ये काफी सारे चेंजेस आए थे और उस चेंजेस को देखते हुए इंडिया ने आईबीसी 2016 ड्राफ्ट किया, ये बोलते हुए कि लेट्स गिव देम अ चांस ऑफ रिवाइवल होने के बाद अगर वो फेल होते हैं तो वी कैन गो इन फॉर लिक्विडेशन. सो अब डेटर को रिवाइवल का चांस दिया जाता है, न कि उसको खत्म करने का. सो दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं. द स्टेटमेंट टुडे इज अ फॉरगॉटन परसेप्शन, हमने क्वेश्चन से लिया. फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं फर्स्ट बैंक्रप्सी लॉ एनेक्टेड इन England in 1542 where the debtor was looked upon as if the offender and the law was mainly for the benefit of the creditors. Okay, clear? फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं the erstwhile law was providing equal distribution of debtors assets among the creditors yet not relieving the debtor from the punishment. ये law हुआ करता था and that was the law. However, present UK Insolvency Act of 1986 prevalent to deal with insolvency of the individuals and companies. Opportunity is given to revive the company to emulate the rescue culture that characterized in the corporate sector in USA. तो पहले के कंपेयर में आज के तारीख में चीजें बदल गई है, रेस्क्यू हो रहा है और काफी चीजें बदल के आ रही है. Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Acts in USA attempts to overhaul the earlier codes with specific reference to consumer protection and restoring personal responsibility and integrity in the bankruptcy. इस पूरे एक्ट्स ने सिनेरियो चेंज कर दिया कि लोगों को सरवाइव करने का चांस दो, उन लोगों को वापस से रीबिल्ड करने का चांस दो rather than completely winding up an entity. और उसके बाद फिर chapter 11 of the bankruptcy proceedings considered a reorganization and restructuring process for the corporates and the companies while remaining operational are permitted to restructure their debts. तो ये था chapter 11 की यूनिकनेस, जिसके वजह से इंडिया ने भी जो नया लॉ अडॉप्ट किया था वो इसी के देखते हुए, दैट इज प्रोमलगेशन ऑफ आईबीसी वाज रिवाइवल अपॉर्चुनिटी बिफोर लिक्विडेशन. क्लियर? सो आपने इस तरीके से पूरा एक आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हो, समझा सकते हो और आंसर कर सकते हो. क्वेश्चन 2 था, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. लेट्स सी. MX Limited admitted in corporate insolvency resolution process under section 7. अच्छा FC की तरफ से था. The resolution professional of MX corporate debtor conducted COC, that is committee of creditors meeting, but the same was adjourned due to the lack of quorum. ठीक है. Accordingly, in the adjourned meeting, a resolution was passed by the COC representing 51% of the voting rights for the liquidation of corporate debtor before the expiry of the corporate insolvency process. Okay. Okay. And you as a qualified CS in the team of RP is required to advise the RP whether the resolution of liquidation is valid in law. ठीक है. So एक क्वेश्चन से एक चीज समझना है, वो पूछ रहा है resolution of liquidation is valid in law. Valid in law मतलब
इसमें क्या चीज होनी चाहिए थी। अगर एक लिक्विडेशन का रेजोल्यूशन पास होता है, तो जहां तक मुझे याद आता है कोई भी रेजोल्यूशन किसी भी नेचर में, चाहे फिर वो लिक्विडेशन डिमांड करे चाहे फिर वो कोई और नेचर में डिमांड करे, 66% के थ्रू पास हो सकता है। अगर ये रेजोल्यूशन 66% के थ्रू पास था तो ये वैलिड था, अगर 66% के थ्रू पास नहीं था तो ये गड़बड़ वाला। बराबर, क्लियर, समझा। तो एज अ रिजल्ट अपने को यही बताना है कि 66% का पार्ट यहाँ पे सेटिस्फाई है कि नहीं। जहां तक मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे सिर्फ 51% ऑफ वोटिंग राइट्स दिख रही है, जो अपने आप में 66% नहीं दिखा रही, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो अपने को उसके बारे में रिप्लाई डालना है कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था। ओके, लेट्स सीक द रिप्लाई, लेट्स सी द रिप्लाई। ओके, सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अप्रूव अ रेजोल्यूशन प्लान बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द एफसी after considering the feasibility and viability and the manner of distribution of proposed, which may take into account the order of priority amongst the creditors laid down in subsection 1 of section 53, including the priority and value of the security interest of the secured creditors and such of the requirements as may be specified by the board। तो हमने ये बता दिया कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो 66% के थ्रू होनी चाहिए, 66% से कम नहीं, चाहे रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चाहे रेजोल्यूशन प्लान डिसअप्रूव हो, लिक्विडेशन की तरफ जाए, वो रिक्वायरमेंट 66% की थी। उसके साथ साथ इन द गिवन केस द रेजोल्यूशन प्लान वाज पास्ड बाय सीओसी मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ओनली 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स फॉर लिक्विडेशन and that too before the completion of the CIRP process. So यहाँ पे the resolution plan passed for liquidation is not valid law as it has not been approved by minimum 66% of voting shares of the FC. Clear? समझा? So resolution plan को approve करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए था? 66%. Okay. Now progress of enforcement of IBC depends on 4 pillars apart from adjudicating authorities. Briefly state the role of such pillars. अगर मैं याद रखूं तो 4 पिलर क्या थे? एक था IBBI, दूसरा था IPA, तीसरा था IU और IP। तो ये 4 मेन पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे एक पूरा IBC कोड चल जाता है। लेकिन ये 4 पिलर्स के रोल्स क्या है? अब मैं सारे लोगों का फंक्शंस तो डिफाइन करने बैठूंगा नहीं, रोल पूछा है, सबका फंक्शंस तो डिफाइन करने बैठूंगा नहीं, तो मुझे आंसर सुटेबली स्ट्रक्चर करना है ब्रीफली उनके रोल को समझाते हुए, क्योंकि वर्ड ब्रीफली यूज किया हुआ था क्वेश्चन में। तो मुझे उसके रोल्स को ब्रीफली समझाना है, किस तरीके से समझाता हूँ, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। वैसे आईबीसी के हिसाब से आईबीबीआई दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, ये अपना पहला पिलर था। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आईपीए दूसरा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तीसरा और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी चौथा। अदर 4 पिलर्स फॉर द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी, बराबर, ये समझा सकते हो। फिर आईबीबीआई के बारे में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में समझा सकते हैं कि नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल इज फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड डीआरटी इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं कि आईबीबीआई के बारे में क्या क्या चीजें और बता सकते हैं। तो आईबीबीआई के बारे में ये बता सकते हो कि आईबीबीआई फंक्शंस विद द चेयरमैन, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 1 आरबीआई एक्स ऑफिशियो एंड 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग 3 होल टाइम मेंबर्स। ठीक है, अब आईबीबीआई करता क्या है, तो फिर ये लिख सकते हैं आईबीबीआई इज इंटरेस्टेड विद द फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मैटर्स, setting up eligibility and registration of intermediaries, something like IPA, IP and IU, while monitoring the intermediaries। तो ये हो गया IBBI का रोल। फिर हम बता सकते हैं IPA का क्या पार्ट है। तो IPAs they are registered bodies, they enroll with insolvency professionals to register before registrations of IBBI। तो ये हो गया IPA का रोल। अच्छा, IP का क्या रोल है? तो IP तो क्रिटिकल रोल था, तो entrusted with the corporate debtor to frame the resolution plan for revival through committee of creditors, that was the role of IP। और IU का क्या रूल है? IU is to keep the records of the liabilities relating to the debtors creditors electronically। फाइन, तो इस तरीके से आपने ये आंसर लिखा हो तो अच्छी बात है, आपने और डिटेल में जाके लिखा हो तो भी चलेगा, बट ये देख लेना टाइम कितना है और मार्क्स कितना है। टाइम और मार्क्स को जस्टिफाई करते हुए आपको लिखना है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ज्यादा टाइम उन लोगों को दे दो जहां पे मार्क्स कम मिलेंगे। क्लियर? तो सूटेबल बैलेंस रखना बहुत जरूरी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो
एक बार उन टॉपिक्स के ऊपर सोचो, पेंसिल लेके बैठो कि अगर ये टॉपिक एग्जाम का है तो मुझे क्या क्या चीजें और पता होनी चाहिए थी। बस इतना ही काफी था, इतना भी पता चल गया तो भी काम हो जाता। ठीक है, क्लियर, फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 ए ये था कि समाधान एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एआरसी है, ड्यूली रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक है, हाउएवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एएमसी इज कैंसल्ड एंड द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी सीक योर एडवाइस फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एआरसी करके रजिस्टर्ड है और अब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हुआ है और वो आपसे एडवाइस चाहती है एज टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब आरबीआई अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है तो इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील करने का एक तरीका होता है, पर जब तक वो अपील सक्सेसफुल नहीं होती तब तक आरबीआई का ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन उनको एप्लीकेबल हो जाएगा, बराबर। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन आंसर आल्सो। So on receiving the communication from Reserve Bank of India as to the cancellation of registration, ARC, if agreed, may appeal to central government within 30 days of receipt of such order. However, the said company has an obligation to pay the entire investments held by it together with interest until such time it will be deemed to be recognized as a reconstruction company for the investments held by it on behalf of the qualified buyers, and repayment needs to be made within such period as may be permitted by Reserve Bank of India under the order of cancellation. आप चाहो तो आंसर पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे मैंने कंबाइंड पैराग्राफ में लिख दिया वैसा लिख सकते हो, आंसर को पूरा डिटेल आउट पॉइंट्स वाइज लिखना चाहो या अलग अलग पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो। दैट्स वेयर यू कैन राइट द आंसर इन एनी ऑफ द फैशन दैट यू नीड टू। बट यहाँ पे समझना एग्जाम में यही सोचना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखना क्या है। सी दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर। वही तो गेम था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे करना क्या है, ये आएगा तो मुझे करना क्या है। एज फार एज पॉसिबल यू आर प्रिपेयर्ड, दैट्स हाउ द प्रैक्टिस हैपेंस। ओके, दैट इज एवरी प्लेयर प्रैक्टिस कि अगर ये बॉल आती है तो मुझे करना क्या है, इस तरीके का शॉट, a swimmer, a badminton expert or any kind of player. So that's what you practice. ये आएगा तो मुझे ये करना है, ये आएगा तो मुझे ये करना है। Okay, fine. Let's see question 3B क्या था। Question 3B के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था? Perfect polymers undergoing CIRP as per the insolvency code, committee of creditors constituted. In the meantime, corporate debtor, that is the perfect polymer, made a settlement with the applicant, financial creditor, and desires the application to be withdrawn in CSEET. तो यहाँ पे withdrawal of application हो रहा है। अगर withdrawal हो रहा है तो जहां तक मुझे याद आता है सेक्शन 12A आता है जहां पे 90% अप्रूवल के साथ आप withdrawal कर सकते हो। So let's write it down. Prior to the amendments in 2018, the IBC Act code, there was no provision for the withdrawal of CIRP application once it was admitted. But Section 12A was inserted in the under the IBC Second Amendment Act of 2018, enabling the adjudicating authority to permit the withdrawal with the consent of 90% of the voting shares of the Committee of Creditors. Okay, and the procedure is to be followed in terms of Regulation 30A of the IBC Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulation, and thereafter the corporate debtor has to make an application in Form FA to the resolution professional, and a bank guarantee for consideration of the committee will within 7 days and subsequently to the tribunal for approval can be submitted. So that becomes rather the part of how you can write a withdrawal of application का answer. ठीक है, clear, समझ में आया? Very good. In resolution process, define the functions of the insolvency professional, and is there an obligation to be noticed or is there a contribution to be noticed? Okay. तो मुझे लिखना है resolution professional का functions क्या है और is there any kind of contribution to be noticed? So any kind of significant contribution, they make the most significant contribution. ठीक है, तो आइडियली मुझे फंक्शन डिफाइन करने का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो लेट्स डिफाइन इट। सबसे पहले सेक्शन 319 के हिसाब से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वन हु इज एनरोल्ड with the insolvency professional agency as a member and registered with IBBI, that's a insolvency professional. फिर मैं उसके functions पे आता हूँ तो God provides IP as an intermediary who plays a key role in the efficient working of the insolvency bankruptcy process. So he is playing a key role. And what is the function? Simple, first point लिख सकते हैं, conducting resolution process. मतलब वो करता क्या है, अगर आप imagine भी करो resolution process start करेगा, meeting conduct करेगा,
पूरा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन करेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फ्लोट करेगा, सबमिट करने के बाद रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा और नहीं सक्सेसफुल हुआ तो लिक्विडेशन. See how simple it is. So conducting meeting of creditors, management of operational debtors as a going concern, preparation of information memorandum, resolution plan, and conducting the liquidation process. That's it. Clear? अब यहाँ पे the contribution of IP has become significant, and the professional bodies are imparting trading such that more IPs can come to this profession. The contribution has been initiated, but the role has a greater and a more prominent in future. So that's where IP stands in the future practice. Okay, so it's up to you whether you want to become an IP in the future or not. Okay, fine. अब आया 4B का क्वेश्चन. 4B का क्वेश्चन काफी हद तक स्टूडेंट्स थोड़े बहुत डाइसी नेचर में चले गए थे क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि पूछा क्या था. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था. यूएन सेटल मॉडल के हिसाब से देयर इज अ बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज बट द बेस्ट ऑब्जेक्टिव डिक्टर फॉर द कोर्ट्स ऑफ द मेंबर्स डीलिंग इन द डिस्प्यूट टू द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एल्यूसिडेट. मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है? जब भी क्वेश्चन इस तरीके का हो एक बार उसको थोड़ा सा स्लोली ध्यान से फिर से पढ़ लेना कि यूएन सेटल मॉडल लॉ इज बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्री बट act as a best objective dicta for the courts of the member countries dealing in the dispute of cross border. तो ऑब्जेक्टिव डिक्टा क्या था? ऑब्जेक्टिव डिक्टा होता है ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. मतलब ये बोलना क्या चाहता है? देखो, माना यूएन सेटल लॉ मेंबर कंट्री को बाइंड करता है लेकिन हर मेंबर कंट्री के कोर्ट पे वो बाइंडिंग लेजिस्लेशन नहीं है, वो सिर्फ एक तरह का ऑब्जर्वेशन है जो कोर्ट अगर ऑब्जर्व करना चाहे तो कर सकती है, पर कोर्ट पे कोई बाइंडिंग स्टैट्यूट या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है. तो जब तक यूएन सेटल उस नेशन का स्टैट्यूट या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं बनेगा तब तक वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं मिलता. That's how it is. So objective dicta refers to the opinion expressed in a court by the judge and not essential to the decision and it's not binding. तो कई बार जजेस एक तरह के ओपिनियन, एक तरह के कमेंट, एक तरह के ऑब्जर्वेशंस देते हैं, but that doesn't mean they are that is the essential part of the judgment. It may be just a general judgment also. The statement emphasized to adopt the law as a legislation in the member countries, but not as not binding on the court unless it is incorporated in the law. तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये बोल क्या रहा है कि unless you adopt it as a legislation, it does not have any kind of binding effect. Clear? So framing of UN settled model law is necessary due to certain things. So अपने को अब set out करना है कि UN settled model law किस तरीके से होगा. Few things that to take care. Global expansion of trade and investments. Inadequate and inharmonious legal approaches due to difference in the regulatory frameworks. Then increasing incidences of cross-border insolvencies की वजह से what we are doing. UN settled model law क्यों चाहिए? एक global trade बढ़ रहा है. Inadequate in हर country का law अपने आप में अलग हो रहा है तो कई commonalities तो चाहिए. Cross-border insolvency क्योंकि countries there are mega firms, there are you can say so many MNCs. So nations out में spread है. So you need that cross-border insolvency integration and national insolvency law of different countries by law large has to keep the pace with the trend because ever changing law है. तो ये सब चीजों का observation देते हुए कि why this UN settled law has become an important part. And thus the thrust of the modern law is to achieve the fair and efficient administration of cross-border insolvency, protecting the interest of every stakeholder. So now you understand how to write the answers. थोड़ा बहुत hang up आपको आ ही रहा है and gradually ये भी देख रहा हूँ कि आपके आंसर्स इंप्रूव हो जाते हैं. पहले टेस्ट में स्टूडेंट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे करते हैं, जब इसी सब्जेक्ट का दूसरा टेस्ट आता है तो काफी हद तक इम्प्रोवाइज कर लेते हैं. क्लियर? उन्हें समझ में आता है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, छोटी छोटी चीजों का क्या ध्यान रखने का. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रैक्टिस इट आउट. Okay, appointment of the voluntary liquidator does not require approval of the tribunal, but the company can be dissolved by the orders of the National Company Law Tribunal. Discuss the above in the background of initiation of liquidation and the consequent of dissolution. तो सीधी बात है भाई, वॉलेंट्री लिक्विडेशन में आपको ट्रिब्यूनल का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, बात तो ठीक है. और कंपनी को अगर मुझे वाइंड अप करना है तो मैं कर सकता हूँ. तो स्पेशली एक रेजोल्यूशन पास करना है, आरपी अपॉइंट करना है, उसके बाद फाइलिंग विद आरओसी करो और स्टार्ट कर दो. और एट द मैक्स अगर कोई क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स का कंसेंट ले लो एंड देन आईपी क्या करेगा, आईपी सारे एसेट्स बेच देगा, रियलाइज करके लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देगा, उसके बाद एनसीएलटी को बोलेगा डिसोल्यूशन. एज सिंपल एज दिस मच. इतना ही समझाना था.
Okay, the provisions relating to voluntary liquidations are contained in section 59 of the IBC, and IBBI voluntary liquidations comes into effect from 1st April 2017. ये हमने set out कर दिया. The relevant sections of the Companies Act relating to the members and creditors of the winding up has been deleted since then. बराबर, क्योंकि वो winding up से निकाल दिया गया है और वो IBC में add किया हुआ है. The resolution passed by the special majority appointing none other than insolvency professional voluntary liquidator begins initially. तो आपको सिंपली इतना बताना है कि अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो आपको सिंपली एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करना है हु कैन स्टार्ट विद द लिक्विडेशन. Directors need to file a declaration of solvency at least 30 days prior to passing of the resolution. Okay. In case there remains a creditors, then 2/3 in value of the creditors should give the approval for the resolution professional. The resolution needs to be filed within next 7 days with the ROC. The insolvency professional needs to be independent of the corporate debtor. And after realization and distribution, the voluntary liquidator files a report before the tribunal under section 59 subsection 8 of the code for dissolution. So that's how the entire process happens. आप चाहो तो डायग्रामेटिकली दे सकते थे, कुछ उन्होंने दिया था, कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज लिख के आ रहे हो, ओके, हर फॉर्म में लिख सकते थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू हैव आंसर्ड गुड. ओके, next question, the banks and financial institutions do have free hand to take the possession of the assets of the defaulting debtor under the SARFAESI Act. Okay, तो यहाँ पे they have a hand to take, लेकिन question क्या था? Are there any exceptions under the Act? तो अपने को question में ये था, इसका आंसर देना था. Are there any exceptions? Exceptions. SARFAESI exceptions. Section 31. Exactly. ये हिट होना चाहिए. सेक्शन 31 में एक्सेप्शंस होता है. तो एक्सेप्शंस में क्या क्या चीजें कवर हो सकती है? लीन था, प्लेज था, एयरक्राफ्ट था, एग्रीकल्चर लैंड था, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है. तो दैट्स वेयर यू हैव टू, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद है तो वो बेटर होगा. तो क्रिएट अ शॉर्ट फॉर्म, रिमेंबर इट. सो लीन, एनी काइंड ऑफ लीन ऑन गुड्स, okay, any kind of pledge on movables, creation of any security interest in the aircraft, and creation of security interest, rights of the unpaid seller, property not liable for any kind of attachment, any security interest for securing payment of the financial assets but not exceeding 1 lakh, any security interest in the agricultural land, in any case in which the amount due is less than 20% of the principal amount and the interest there. So that becomes the exception. That becomes the exception. अब समझ में आया? So आपको ये बताने का है कि कौन से exceptions के अंदर आप ये आंसर लिख सकते हैं. Now straight away आप point wise लिखो, better रहेगा. फिर क्वेश्चन भी वैसे ही था, तो 1 2 3 4, और जितना अच्छे से आप पॉइंट फ्रेम करके रखोगे बेटर रहेगा. Okay. Then mention the provision of section 95 of the IBC in relation to filing of an application to the creditors. ये जो 95 आया ना, मैंने देखा स्टूडेंट्स थोड़े मिस आउट हो गए, बकड अप हो गए, समझ में नहीं आया 95 कौन सा था, ऐसा हो गया. 95 कौन सा था? अरे 95 इंडिविजुअल एंड फर्म्स का इंसॉल्वेंसी का था, याद आया? तो 95 फर्म्स एंड इंसॉल्वेंसी का था, और वहीं पे स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं हिंट नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था 95 ऑफ आईबीसी के हिसाब से. तो यू हैव टू रिमेंबर 95. कई जन तो ये सोच में सेक्शन 3 4 7 8 9 एप्लीकेशन 95 एप्लीकेशन कौन सी थी. ये हिट होना चाहिए इधर कि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म के इंसॉल्वेंसी के बारे में. 95 उसके बारे में था. Okay, so आंसर में लिख सकते थे 95 provides for insolvency resolution process application by creditors in relation to a partnership debt owed to the creditors, and the creditors can file an application against the firm or one or more of the partners of the firm, provided separate application will be made against the partners for the same firm shall be considered and heard together. ठीक है, तो वही पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना था, दैट इज इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कैसे होगा. So according to subsection 1 of 95, the creditor may apply either by himself or jointly with other creditors or through a resolution professional to the adjudicating authority for initiation of an insolvency process under the section. तो यहाँ पे वो एक एप्लीकेशन करेगा कि मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करना है इस पार्टनरशिप फर्म के पास या किसी पार्टनर के खिलाफ. तो यहाँ पे द क्रेडिटर मे अप्लाई in against any partnership debt which is owed to him for initiation of an insolvency process against one or more partners or the firm itself. So he can apply.
और अगर आपने अलग अलग लोग अलग अलग पार्टनर्स के खिलाफ अलग अलग जोन में केस करें तो सबको मर्ज करके एक साथ सुना जा सकता है. दैट वाज अ केस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. So where an application has been made against one partner in a firm and another application against another partner of the same firm shall be presented or transferred to the adjudicating authority in which the first application is pending for the adjudication. तो मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं सुने जाएंगे, एक जगह पे क्लब कर दिया जाएगा. एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी may give directions for consolidating the proceedings under the application as it thinks fit. Clear? साथ में supporting documents, evidences वगैरह लीड करने पड़ते हैं. So accordingly, an application shall be accompanied with the details and documents as may be specified by the board. So whatever details, whatever documents as specified by IBBI, that has to be given. तो इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? The debt owed by the debtor to the creditor or the creditor submitting an application for insolvency resolution process on the date of application. तो एक साबित करो कि there is a outstanding debt. दूसरा, the failure by the debtor to pay the debt within the period of 14 days. ये साबित करो कि सामने वाला पेमेंट नहीं कर पाया है. And relevant evidence of such default on non-repayment of the debt. कि उसने ये डिफॉल्ट किया in spite of giving him sufficient notice. Clear? And then application की कॉपी उस पर सर्व किया जाए. The creditor shall provide a copy of the application to the debtor. The creditor has to give a application की copy to the debtor concerned. And the form and manner the application shall be in such form and manner as may be prescribed. As per the rules that will come up, that has to be there. And the details are in the documents which are required to be submitted as to be specified by the law, that has to be submitted. Clear? समझ में आया? तो 95 क्या था? कई लोगों को कंफ्यूज है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रीपेमेंट प्लान ओके अंडर सेक्शन 105. अब ये जो रीपेमेंट प्लान था ये भी एक तरह का ऐसा प्लान है जहां पे इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स की रीपेमेंट्स की बात हो रही है. ओके तो ये रेजोल्यूशन प्लान नहीं है. आपको सेक्शन 60 या 30 साइट नहीं करना था. आपको इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म का रीपेमेंट प्लान के बारे में बताना था. थोड़ा सा ध्यान रखो वर्ड्स का. रीपेमेंट प्लान क्वेश्चन में क्लियर हिंट था. तो रीपेमेंट प्लान के हिसाब से 105, द प्रिपरेशन ऑफ अ रीपेमेंट प्लान बाय द डेटर in consultation with the resolution professional. The repayment plan will contain terms as per which the debtor will pay his debt to the creditors. तो किस तरीके से debtor अपने creditors को debt pay करेगा हम वो बता रहे हैं. फिर हम लिख सकते हैं the creditors are not involved in the preparation of repayment plan and therefore the repayment plan will contain the reasons as to why the creditors may be expected to agree to repayment plan. तो अगर creditors खुद repayment plan में involved नहीं है तो एक रीजनिंग आएगा ये बताते हुए कि डेटर ने रीपेमेंट प्लान क्या प्रपोज किया, why should they be agreeing. So that's what it is there. The debtor shall prepare in consultation with the resolution professional a repayment plan which is proposed to be paid to the creditor for restructuring of its debts. Clear? उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि the repayment plan shall include the following: the justification for preparation of the repayment plan, reasons on the basis on which the creditors will agree upon, provision for payment of fee of the resolution professional and other matters. तो ये हो गया रीपेमेंट प्लान का स्ट्रक्चर कि क्या जस्टिफिकेशन है, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, व्हाट इज द रेजोल्यूशन प्लान कॉस्ट एंड अदर स्ट्रक्चर्स. एंड repayment plan may authorize or require a resolution professional to carry on the debtor's business or trade on behalf of his name, realize the assets, administer and dispose of the funds of the debtor. तो ये पूरा काम resolution professional करेगा who will be acting on behalf of the debtor. So this is how you could have answered the question and all the best for your exams and please test को साथ साथ पढ़ाई तो कर ही रहे हो, टेस्ट भी करते जाओ और अपने आप को ऑब्जर्व करते जाओ how you are answering the question. Okay, all the best for exams and keep working hard. This is the time for you. Okay, so bye.